So hello everyone, this is Navneet Misra from NviNomics, and today we have a special guest and very bright mind, very positive nature personality, Hetal from Gujarat. Currently she is pursuing her masters in economics from Kerala University. So rather than telling her everything about her, I would like to invite her and just give a brief about herself. Yeah, Hetal, welcome. Thank you, sir. Hello, everyone. Really nice, feeling nice to be here in front of such a great chance. Great chance it is. और बताइए कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स वगैरह भी कैसे चल रहा है? I did my BCom from Veer Narmad South Gujarat University, ओके. Surat itself, हाँ. and now I'm pursuing MA Economics in Central University of Kerala. I studied from Navneet Mishra, sir. So, feeling nice. अच्छा अच्छा, चलिए ये तो ठीक है, अच्छी बात है. बट वन थिंग आई फाउंड, यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन. आई रिमेंबर द डे आई मेट यू ऑन द डे ऑफ HCU काउंसलिंग, Yeah. and I was quite surprised when you messaged me ki sir my rank is very low, and still you Very just true. came to have a feel of campus life to meet me and to meet your colleagues कि कैसा काउंसलिंग होता है. तो इट शोज योर द क्यूरोसिटी फॉर द एकेडमिक्स की एक एडवेंचर करना है बाहर जा से, एक जैसा कि बोला कि आपने एक सबर्बन एरिया के एक छोटे से कॉलेज से पढ़ाई किया, तो ये बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के लिए मतलब कौन आपको प्रेरित किया? हाउ यू ड्रीम्ड ऑफ दिस बिग? बस आपके वीडियो देखे थे तब से ये था कि एचसीयू देखनी है एंड व्हेन माय I just saw my name there in the list. I अच्छा. was like, I want to go. Anyhow, I want to go. And even I told you, na, 99.99 यस percentage यस. my mission will not be done. But I want to go. So that कि लास्ट में फिर वो नहीं रहे कि यार एक बार कर लिया होता तो कुछ हो जाता. या. And it is such a great feeling whenever I'm think about that. I feel blessed that I have seen HCU. Yeah. तो होप, चलिए पीएचडी में आप फिर से यहाँ ज्वाइन करें. और फिर केरला का स्टोरी कैसा रहा? आई मीन केरला यूनिवर्सिटी, फिर उधर कैसे जाना हुआ? बस यहाँ पे क्लासेस तो 4 सितंबर से चालू हो गए थे, बट मुझे एडमिशन मिला है, लेट एडमिशन हुआ है आफ्टर अ मंथ. सो व्हेन आई गॉट मेल फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी, सो आई जस्ट वाज लाइक ओके, लेट्स गो. सो it's such a nice journey. This university is so good, underrated too, and I'm happy. चलिए अब बात करते हैं वहाँ जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हैं. व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज दे ऑफर? व्हाट्स द नेम ऑफ दैट कोर्स? MA एम ए Economics. इकोनॉमिक्स. वाई? बिकॉज मेनी पीपल गेट कन्फ्यूज. MSc इकोनॉमिक्स कहीं जगह हैं, और जो Yeah. बेसिक एलिजिबिलिटी क्या रखें? व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज फॉर दैट? Just normal bachelor, you should have 55 percentage, ओके ओके. and nothing like maths criteria, हम्म. and just ओके ओके. क्या स्ट्रेंथ है? व्हाट इज द इनटेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बैच? 40. 40 स्टूडेंट्स. Yeah. और फैकल्टी वगैरह किधर के हैं मैक्सिमम? From Kerala. Kerala itself. Kerala. I mean, so how's people there? I mean, how's environment? माहौल कैसा है वहाँ का? बढ़िया है, God's own country, so बड़ा सोच समझ के नाम दिया है. अच्छा. जगह की काफी, जगह में कुछ बात है. जगह में बात है. चलिए कि मतलब मन लग गया वहाँ आपका. और जिनको ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है, डेफिनेटली दे शुड लुक फॉर रेदर देन टेकिंग द ड्रॉप. Yeah. चलिए, एक कन्फ्यूजन और रहता है इन मैनी पीपल कि सर मतलब नॉर्मल पीजी मुझे अगर करनी हो, बिकॉज आई फाउंड कि अगर आपको नॉर्मल पीजी करने हो, नेट जीआरएफ वगैरह कीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, इन पीएचडी यू कैन लुक फॉर समथिंग बेटर. तो रेदर देन टेकिंग द ड्रॉप, वुड इट बी बेटर टू ज्वाइन केरला यूनिवर्सिटी और नियर टू दैट इफ समबडी इज इन दैट एरिया? It is worth to It is join worth. Central University of Kerala because professors are so supportive. Okay. People are so good. You will never feel left out. Hmm. Even though so many of us, like mostly the strength is from Kerala itself. Most of them are Malayalis itself. But you will never feel left out. People are so nice. The most loved thing here is people. They will never left you feel alone. And such a great chance. Everything is so good. Academics is so good. और what about the infrastructure and other facilities which is required for a student? This university is established in 2009. So it's new and it's quite impressive. लाइब्रेरी वगैरह हैं वहाँ पे? Yeah. हम्म. Yeah.
What about the accommodation, hostel, and like female अगर कोई हो, you It's quite safe. After 11 p.m. night, you can't go out. You have okay. to be back by 11 p.m. And yeah, mostly all the people get hostels. Mostly all the people get. Hostels, yeah. और फिर मेस फैसिलिटीज़ भी होंगी, फूड वगैरह. Yeah, yeah, yeah. Food is quite good. अच्छा. I'm from Gujarat. We are so foodie. We, जल्दी से ऐसे मन नहीं लगता है खाने में. But here, food is good. अच्छा, I'm यू वेट saying, की, अच्छा यू वेट की फूड का टाइम आ जाए, मेस का टाइम आ जाए और मुझे मतलब वो मिले. yeah, yeah. I'm enjoying. अच्छा अच्छा. नो. चलिए अब बात कर लेते हैं. कुल मिला के अगर आपको ये बोला जाए कि अगर आप वहाँ से मास्टर्स किए, तो इन सिंपल टर्म्स व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर मास्टर्स और ड्यूरिंग मास्टर्स इफ समबडी हैज डन देयर फ्रॉम देयर. Okay, placements, not that much. No, it's not only in terms of placements. We should not judge on the basis of only placements, because Okay, during masters the sky is, I mean, it's not limit. You can fly as much as you want. yeah, चाहे आप रिसर्च एसोसिएट के काम कर लो, या फिर आगे पीएचडी वगैरह कर सकते हो, या फिर फॉरेन वगैरह जा सकते हो, या फिर कुछ बच्चे सिविल्स में तैयारी करते हैं, आईईएस की तैयारी करते हैं. तो आई एम आस्किंग अबाउट द ओवरऑल इन्वायरमेंट. क्या कल्चर है वहाँ पे, किस तरह से बच्चों को वहाँ पे ट्रेन किया जाता है. बस हर तरीके से लोग अपना 100% दे रहे हैं. आपको ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के ओके प्रिपरेशन करते हैं. ओके ओके. आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो प्लेसमेंट्स करना चाहते हैं. हर तरीके से जुड़े हुए लोग हैं, हर किसी के अपने ग्रुप है, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा. आपको गाइडेंस चाहिए. एवरीवन इज सो सपोर्टिव. स्टूडेंट्स टू प्रोफेसर्स, एवरीवन, every kind of people अच्छा are here. अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि इफ़ यू सी यू बीइंग फ्रॉम द ओके वेस्ट इंडिया एंड ऑल, बट स्टिल आई वुड Yeah, से कि यू कम फ्रॉम द हिंदी बेल्ट, बिकॉज हिंदी इज ऑल्सो स्पोकन इन योर एरिया एंड ऑल, अपार्ट फ्रॉम द गुजराती. तो अगर yeah, किन्हीं किन्हीं जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो, ऑब्वियसली yeah, बेसिक इंग्लिश एवरीबडी नोज, सो yeah. विल एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज बैरियर इन दैट रीजन. No. इट्स नॉट दैट. Mostly people speak English, ओके and mostly Malayalis are here, so Malayalam and English are the most spoken languages. But if you like those people, they understand a little bit Hindi. But if you know only Hindi, then it is hard to survive here. difficult. Because Okay most, okay okay. yeah, चलिए, फ्रॉम योर साइड टेल मी द फ्यू फैक्ट्स व्हाट ए जेन्यून स्टूडेंट शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग हेयर, एंड विच इज नॉट देयर ईदर ऑन द पेपर और ऑन द यूट्यूब और एनीवेयर, so that okay, you can just tell them, convince them, or just a kind of suggest them कि these things you must know before joining Kerala University. yeah. First fact is you must know Hindi. You must be knowing English before English. joining. Okay, Because first thing. yeah. Okay Second is politics is not that much. okay. It's such a blessing कि अच्छा politics इतना अच्छा, ज्यादा नहीं लेफ्ट राइट ज़्यादा उधर नहीं है. नहीं है. ओके And the third is attendance criteria. You might not like that cause attendance is, they are so strict about attendance. You have to attend classes. ओके. Otherwise they would not let you. कितना परसेंट अटेंडेंस चाहिए, हाउ मच इट इज. 75%. ओके, दैट्स मैंडेटरी. Yeah, that's mandatory. ओके ओके Anyhow, ओके ओके. चलिए, yeah, and now coming back to the us, just I would like to convey to those students, especially people who stay from the, I mean, village area, I know, and who has not been that much efficient in learning economics, but still fire is there in your belly, like she wanted to explore wherever it goes. And I still remember when you messaged me and you were very happy, super happy, and I was also very happy, because when I met you, you told, sir, just I want to go outside my state and I want to study. So yes, that opportunity you got, you don't see the which institution I am going, because it's not, I mean, that much famous like DSE, JNU, HCU and all. The idea is that let's step out, let's learn something. yeah, So that kind of mentality people have, especially women has. yeah, Do you find a kind of freedom, kind of empowerment, it's instilled in your, I mean, personality once you are outside the home or the state? yeah, It's there. yeah. Yeah. So it was pretty nice talking to you. और चलिए, hope to see you there in Kerala, God's own country, if I visit there.
Hope I Yeah, will hope I will be hosted by you. And yeah. literally I admire you, the positivity you have shown to the Thank you others so generation. much. और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी रहेगी कि स्पेशली पीपल स्टेइंग इन द विलेज एरिया, रिमोट एरिया, बी इट गुजरात और बी इट एनीवेयर, just convince them, not convince them, just inform them कि there are lots of options. Yeah, there are It lots exact of options, but exactly. they are like so rigid. I want to get into this university. If I don't get that, I No, don't want no, to. no, no. And Story doesn't here. Even I have done my graduation from the state university, yeah, and what I found, it's up to your capability these days in the digital era. Whatever we want, we can do. अब तो आपके फ़ोन और लैपटॉप में ही आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, और ऑल इंडिया एग्जाम है, नेशनल एग्जाम है. या कमिंग टू द कट ऑफ एंड ऑल थिंग, हेतल, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द अप्रॉक्स कट ऑफ थिंग्स, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स? um, highest is 160. Okay, There is one guy in our class who got 160 in CUET, okay. and the lowest is 110 plus. Okay, so 100 plus, you can think of getting into it. 110 plus, it would be Okay, safe. okay. That's the for general category. For no, for general category. 160 plus, that guy is from general category, and 110 plus, anyone. Okay, spot एडमिशन भी था वहाँ पे? No spot admission. अच्छा अच्छा. Now that's the positive sign because I know many university, I won't tell the name, सीट्स रिमेन वैकेंट. अगर वहाँ पे 40 सीटें हैं, 50 सीटें हैं, तो 10 सीट 12 सीट खाली रहती है. एंड Yeah. आई थिंक देर इज ए नो सीट वैकेंट इन योर, आई मीन, डिपार्टमेंट. नो, No. दैट शोज द ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूट, बिकॉज आई नो वो जो 2000 एक्ट के तहत, 8 के तहत जो आया था, केरला यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, शायद हरियाणा भी थी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी थी, या सो बहुत जगह हैं सीट खाली रहती है. इफ सीट्स आर, आई मीन, फुल, दैट इज द गुड साइन दैट द ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूट. Institute. एंड या आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप 2 साल में जितना हो सके अधिक से अधिक लर्न करें. Yeah. And I also know you learn understanding people, understanding place, you enjoy the things. That's the Yeah. beyond study that develop our, I mean, all overall personality. क्योंकि पढ़ाई क्या है ना, what I found, experience is the true knowledge. Yeah. पढ़ाई आपको डिग्री के बाद कोर्स खत्म किए, it won't work, but Yeah. experience will pull you through across the life. The thing we learn from people, places, something different. Exactly. And I also hope कि your parents are also happy. They are so happy. Oh my So god, happy. definitely Yeah, when their kids are happy, तो parents will be happy. they're happy. चलिए फिर we'll end the session here and wish you all the best. चलो, Thank you. good luck. Sir. Thank Thank you. you, sir. Thank you. Bye bye. Bye.